नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय तक गतिरोध रहा। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक बिल यानी प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश किया जा सका और इसे विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया। हालांकि विपक्ष का प्रबल विरोध रहा। इसको लेकर सत्ता पक्ष को इसका विरोध का सामना करना पड़ा है। वास्तव में यूं कहूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में लंबे समय से बहस होती रही है और आज उसका स्पष्ट नजारा संसद में भी देखने को मिला है। कुछ दल हैं जो इसके पक्ष में हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो लगातार इसको लेकर रिजर्व रहे हैं, यानी इसके विरोध में रहे हैं। उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू व्यावहारिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुधर्मी लोग रहते हैं, चाहे हिंदू धर्म है, ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, अन्य कई धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जीने के अपने अपने तरीके हैं और खासकर उनकी जो रिलीजियस माइथोलॉजी है, रिलीजियस प्रोसेस हैं, वो भी सबके अलग अलग हैं। सांस्कृतिक पारिवारिक कुछ परंपरा भी है, वो भी अलग अलग है। इसको लेकर विपक्ष के सांसद इस बात से मुखर रहे कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस बिल को लेकर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा से राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने ये बिल लाया सदन में और वो इंट्रोड्यूस करने की उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने अनुमति दी, लेकिन इसको लेकर विपक्ष का विरोध देखने को मिला। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों को समझाने की लगातार कोशिश की। अंततः मत विभाजन कराना पड़ा इंट्रोड्यूस करने को लेकर और उसमें इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में बहुतायत में वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में कम मत आए संसद में। तो हालांकि पहले ध्वनि मत से इसे पारित कराने की कोशिश की गई, यानी इसे इंट्रोड्यूस करने की अनुमति देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इसे डिवीजन मांगा गया, वोटिंग मांगी गई इस पर विपक्ष के द्वारा और उस पर वोटिंग कराई गई। और इस मामले को लेकर खासकर एमडीएम के तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद वाइको काफी विरोध कर रहे थे। साथ ही राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया। लगातार वो सभापति जगदीप धनखड़ से यह अनुरोध करते दिखे कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की ही अनुमति न दी जाए, अन्यथा देश में एक विवाद पैदा होगा, धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, आपस में तकरार की स्थिति और बढ़ सकती है। इस प्रकार की आशंका आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी व्यक्त की। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की ही आशंका व्यक्त की और सभापति से इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करने की अनुमति नहीं देने की मांग की और अनुमति नहीं देने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस बिल को यानी प्राइवेट मेंबर बिल प्रावधान के तहत पेश करने वाले भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा से भी सभी ने एक स्वर से विपक्षी सांसदों ने इस बिल को वापस लेने की मांग की, अपील की। जेबी माथेर जो कांग्रेस केरल से सांसद हैं, उन्होंने भी इस बिल को लेकर किरोड़ी लाल मीणा से इसे वापस लेने की अपील की। डॉक्टर फौजिया खान जो कांग्रेस की सांसद हैं राज्यसभा, उन्होंने भी इस बिल को लेकर विपक्षी राजनेताओं, विपक्षी सांसदों के सुर में ही सुर मिलाया। लेकिन अंततः जगदीप धनखड़ सभापति ने व्यवस्था दी, क्योंकि किसी भी मेंबर को प्राइवेट मेंबर बिल के प्रावधान के तहत कोई भी बिल लाने का अधिकार है और इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अंततः यह सदन का निर्णय अंतिम होगा इस मामले में कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, या फिर इसे विचार के लिए एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसलिए इसमें दोनों ही पक्षों के अलग अलग मत हो सकते हैं और जिसे देश को जानने का पूरा
अधिकार है। इसलिए उन्होंने विपक्षी सांसदों से आग्रह किया बारंबार कि आपका जब मौका आएगा तब अगर यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ और ये विचारार्थ इसे स्वीकार किया गया तो इस पर आप अपने पक्ष मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। इस पर किसी का विरोध या समर्थन हो सकता है, लेकिन इससे आप नियमों के अनुरूप अपनी बात रख सकते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हंगामा करके इसे आप नहीं रोक सकते। उन्होंने सांसदों से कहा कि इस बिल पर देश को दोनों पक्षों के विचार जानने जानने दीजिए और यह देश का भी अधिकार है और संबंधित सांसद का भी यह अधिकार है, क्योंकि संविधान में इस प्रकार के प्रावधान हैं और यह उनका अधिकार है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अंततः इस पर सदन का अंतिम निर्णय सर्वोपरि होगा। और किरोड़ीलाल मीणा को बिल इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दी गई, जिस पर बाद में वोटिंग कराई गई और बहुतायत में इस बिल को विचारार्थ स्वीकार करने की सहमति सदन को मिल गई और विपक्ष में कम वोट पड़े, यानी 61 वर्सेस 23 की वोटिंग से इस बिल को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया। और इस बिल का नाम है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमिटी फॉर preparation of Union Civil Code and its implementation within territory of India। कहने का मतलब है कि ये जो बिल किरोड़ीलाल मीणा भाजपा सांसद इंट्रोड्यूस जो उन्होंने किया है, इसके पीछे आशय है और इस बिल के माध्यम से अगर यह बिल पारित हो जाए सदन में तो फिर इस बिल के अनुसार एक कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी को यह अधिकार होगा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे सारे प्रावधान एक बिल तैयार करे कानून पारित कराने के लिए संसद में। साथ ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में किस तरह से लागू किया जा सकता है उसके तौर तरीके सारे प्रावधान भी वो कमेटी सुझाएगी और इससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, जांच पड़ताल भी करेगी कि क्या कैसे किस तरह से हो सकता है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे कि सभी धर्मों के लोग इस देश में रहने वाले सभी इसे आसानी से एक्सेप्ट करें और सब पर ये एक समान कानून लागू किया जा सके। अंततः इस बिल को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया। आइए आपको दिखाता हूं कि आज संसद में राज्यसभा में क्या कुछ हुआ और कैसे सभापति जगदीप धनखड़ को बारंबार विपक्षी सांसदों को समझाना पड़ा। अंततः इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पर विचारार्थ फिर वोटिंग करानी पड़ी और विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाता हूं। पहले आपको दिखाता हूं कि जगदीप धनखड़ ने कैसे इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको कहा, क्या बातें हुई और संवैधानिक जो प्रावधान है उसको लेकर उन्होंने क्या व्यवस्था दी सदन में, और बाद में फिर आपको सुनवाऊंगा कि जो विपक्षी सांसद हैं जिन्होंने अपने अपने विचार इस बिल को इंट्रोड्यूस करने को लेकर कहे हैं वो उन्होंने क्या कहे, क्या उन्होंने तर्क दिया है, क्या उनके पास कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा संवैधानिक तर्क है जिसको लेकर वो इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर केवल जो एक सोशल फैब्रिक है इंडिया का उसको लेकर वो केवल आशंका व्यक्त कर रहे हैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने को लेकर। आइए आपको दिखाता हूं राज्यसभा में आज क्या कुछ हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर। Please take your seat. Honorable member, please take your seat. Once there is a slip from your side, you will get full opportunity. Take recourse to the rule. Please take your seat. Let us not generate optics beyond what is permissible by the rules. I have all the intelligent approach. Please. Sir, take your seat, sir. Would you please take your seat? Sir, I am on the chair. I am on the chair. If I am on the chair and standing, please take your seat first. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I appeal to the honorable member
I have indicated with clarity something which is constitutional premise. We have to decide things here by dialogue, discussion, and deliberation, which means in a methodical manner, everyone will have his or her say. Can we be so chaotic? Anyone will rise and say anything one likes? If you have a point, when I call your name, say everything you wish to. If I find all that you have said is in accordance with law, it will go on record. If any member makes an observation which I find is not in accord with law, I will take a call on that. So we will follow the rule. You must send your slips. All those who, if you have given notice, it is with me. If you have given notice, it is with me. Wait for my call. No. Motion moved. There are 3 notices. One is given by Shri Vaiko, Shri Abdul Wahab, and a joint notice given by Shri Ilama Ram Karim, Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. V. Sivdasan, Dr. John Britas, and Dr. Shri A. Rahim, opposing the introduction of the Uniform Civil Code in India Bill 2020. Dr. Kirodimal Meena. I also to introduce the bill. Would the honorable member like to say anything about the bill? बोलना चाहते हो? बिल पे कुछ बोलना है? तो बाद में बोले ना? ना अभी भी बोल सकते हो। थोड़ा बहुत बोल दो। थोड़ा बहुत बोल दो। सर कंसिडरेशन के समय मैं इसमें विस्तृत सदन में जानकारी दूंगा, उस समय चर्चा की जाएगा। Okay. He has made his point. I now call up. 1 second. Take your seat. 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 Please take your seat. Honorable member, take your seat. Honorable member, please take your seat. Please take your seat. Next. Take your seat, honorable member. Please take your seat. Take your seat. 1 second. Take your seat. Chairman, if you have respect for the chairman, would you for a minute take your seat? Take your seat. Please. Take your seat. I urge you to take your seat. Take your seat first. Honorable member, please take your seat. Honorable member, I am urging you to take your seat so that I can proceed further. Take your seat, please. Take your seat. Wait for my next direction. Take your seat. Resume your seat. Honorable member, take your seat. See what I do. Take your seat first. I appeal to you, honorable member, I appeal to you to take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please. Please take your seat. Honorable member, please take your seat. First, take your seat. I will go according to rule. Take your seat. Take your seat first. Please take your seat. Take your seat.
Please take you will find highest traditions being maintained. Mr. Vaiko, please take your seat. Mr. Vaiko, please take your seat. This is first, please take your seat. You don't have respite even for 5 minutes. Take your seat, Mr. Vaiko. Mr. Vaiko, please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Mr. Vaiko, don't force me beyond a limit. Mr. Vaiko, nothing goes on record. Nothing will go on record. Mr. Vaiko is required to take his seat. Honorable members, I seek your protection. What I was going to do was to call upon Mr. Vaiko and thereafter others to express their view on this. He wouldn't allow. He would like to have his way. This is not a physical affair. I'm extremely in anguish. Disillusionment of the people at large is to an extreme degree. Here is a chairperson who is giving you fullest opportunity. You don't want to avail it. I was reading out. These are the gentlemen who have given notice. Each of them will have their say. You don't allow me. Are we here to generate optics? Are we here to generate theatrics? Are we here to generate an impression that we are a house in mess? We don't believe in decorum, in rational approach. I appeal to you with heavy heart and great pain. For heaven's sake, believe in yourselves. Believe in rule of law. Let us not get ridiculed in the public at large. The expectations of 1.3 billion people from us are enormous. Let us not fail them. I call upon Sri Vaiko. Take your seat, Mr. Vaiko. What I'm saying, I call upon Sri Vaiko to make his input on this. Consists of so many religions, so many faiths, so many languages, so many cultures. So this is a country of so many nationalities. It is not one nationality. So, no, my view, I am putting my view, I am entitled to put my view. Patriotism is not the monopoly of you people. Patriotism is not the monopoly of you people. You may have majority. You may have majority. With your brutal majority, you don't want, or you want to destroy everything. Address the chair. Address the chair. Okay. Address the chair. Address the chair. Address the chair. Address the chair. Everyone has to keep calm and composure. Address the chair. Address the chair. We want to respect the chairman. Address. We are keeping quiet means we want to respect the chairman. Nice. We want to respect the chairman. Take your seat. Only Mr. Vaiko will be on his legs. Mr. Vaiko will have time to make his input on this significant issue. Let us give him rapt attention. And
I would appeal to everyone not to be agitated. He has full right and protection of the chair to express his opinion, and no one in the House should interrupt him or take position while he is speaking. You are allowed to take your position only when your turn is there. Mr. Waiko, you may go ahead. Mr. Chairman, sir, I am so thankful to you for permitting me to put my views. They are implementing one after another of the agenda of RSS and BJP. They have finished Kashmir. Now they have come to common civil code. So in that manner, where we are going, where we are leading towards the disaster of the country and disintegration of the country. And the minority people are terribly hurt. Their sentiments have been totally annoyed. Therefore, Mr. Chairman, kindly see the bill is not introduced today. Last time they tried. Then when they thought they could not get a majority, they did not proceed. They ran away. This time they have got majority. Therefore, they are trying to bulldoze this thing. But this will lead to worse disaster and danger to the country. Professor Ram Gopal Yadav. धन्यवाद श्रीमान। मेरा पहला ऐतराज तो ये है कि ये जो बिल जिस पर हम लोग ऐतराज कर रहे हैं, ये बेसिकली संविधान के ही खिलाफ है, संविधान की कुछ धाराओं के खिलाफ है। ये आर्टिकल 26 बी देखिए आप और 29(1). 26 बी में ये है, ये फंडामेंटल राइट्स में है सर। छब्बीस बी में है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to manage its own affairs in matters of religion. आर्टिकल 29(1) में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. मेरा इन्हीं दो आर्टिकल्स को लेके और कुछ अन्य बातों को लेके गंभीर इस पर ऐतराज है। संविधान के आपने शुरू में सर कहा था कि अगर संविधान के अनुकूल कोई बात है तो उसको रखने से, इंट्रोड्यूस करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन संविधान के अगर प्रतिकूल है तब तो उसे रोका ही जा सकता। आपको इसे अलाउ भी नहीं करना चाहिए थे और इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। सर, संविधान सभा में हिंदुस्तान के उस वक्त की इंटेलेक्चुअल क्रीम थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक। बहुत काबिल, बहुत विद्वान लोग थे। अगर हम लोग उनसे ज़्यादा काबिल समझते हैं तो ईश्वर रक्षा करे। उन्होंने इसीलिए इन सब बातों को बचाने के लिए कि जो माइनॉरिटी में हैं लोग, उनके कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों पर को बुलडोज न किया जा सके, संविधान के मौलिक अधिकारों में इसकी व्यवस्था की थी। हम जानते हैं, देखिए, मुस्लिम्स में चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता है। क्या हिंदुओं में ऐसा संभव है? आप समान संहिता की बात करते हैं तो इधर से लागू करोगे या उधर से लागू करोगे? इसलिए ये अनावश्यक बातें, अब देश में शांति बनाए रखो,
15-15 लाख रुपया लोगों की जेबों तक पहुंचाने का काम करो। ये काम ये वापस कर लो मीना साहब। ये 75 साल के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और ये सब दिक्कत ये है कि सब 75 साल जो अरे आप राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के लिए तो नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जनहित में संविधान को देखते हुए भी, लोगों की मंशा को देखते हुए, देश में कहीं किसी तरह से अविश्वास न किसी के प्रति हो, सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति कोई अविश्वास न हो, इस बिल को वापस लेने का मैं अनुरोध मीना साहब से करता हूं आपके माध्यम से। श्री डॉक्टर फौजिया खान। Thank you very much, Chairman, sir. Here I would like to say that the beauty of our Indian democracy and the uniqueness of India in the whole world lies in its unity in diversity. Our diversity is extremely important and it has to be retained. It cannot be ravaged like this, sir. Sir, just like a rainbow in the sky where many colors are there and it gives beauty to the sky, in the same way our diversity gives beauty to our democracy, sir. And the way this bill has been trying to be introduced in the House, sir, I would only plead through you to the member, kindly withdraw this bill because, sir, it is not in consonance with the uniqueness of our democracy, which इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस उच्च सदन में खड़ा होकर के आपसे ये अनुरोध करूंगा कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, बना हुआ है, ऐसे वक्त में इस तरह का एक और बिल ला करके उस खाई को और बढ़ाने की कोशिश करना, ये कहीं से भी न तो प्रासंगिक है और ना तो जरूरी है। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें जस्टिस बीएस चौहान साहब का सीधे सीधे कहना है कि इस तरह के किसी कानून की न कोई आवश्यकता है अभी, न कोई जरूरत है। ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि इस सदन की जो जिम्मेदारी है, इस सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो देश के लिए एक नए विचार प्रस्तुत करे, नई बात लाए, नया माहौल बनाने की कोशिश करे, ना कि ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करे जिससे समुदायों में, धर्मों में आपस में कहीं ना कहीं दुराव पैदा हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कृपया इस बिल को आप खुद एक्सेप्ट ना करें और सदस्य महोदय से भी अनुरोध है कि इस तरह का कोई बिल ला करके उस पर बहस की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इस सदन में है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बिल को किसी भी तरह से एक्सेप्ट ना किया जाए। Honorable members, we did have some tempers. I am happy that my thought process, which emanates from your wisdom, could find some reflection. Everyone has had say, and that is the beauty and essence of structured debate. And we learn this from Constituent Assembly, that it is the structured debate through discussion and dialogue that in a serious theater like this upper house, we give message to the entire country. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. I want division. Those against, but those against, 1 second. One second. Mr. Vaiko, you are such a senior distinguished person. Very few people can have that kind of credential. You have traversed decades. When I was about to give floor to you, you did not allow me to give the floor. And we took 5 minutes. When I was about to seek your response, you didn't give me that opportunity. I will go by procedure. Trust me.
if at all I have to lean, I will lean constitutionally towards this side. And therefore, why be in agitated mode? We have to mentally, persuasively, strongly give voice to our thought process. I have simply said, please, those in favor will please say aye. They have given. Now I say those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is introduced. Okay. Okay. Secretary General will now explain the voting procedure. Honorable members, as you are aware that special seating arrangements were made during the pandemic days, and now after resumption of normal seating arrangements, specific seats, division numbers could still not be assigned to all the members. Therefore, it is not possible to conduct voting through the automatic vote recording system. Voting will therefore be done through the division slips. Members are requested to legibly write their names, date, and in place of the division number, their identity card number on the division slips, if they remember. The division slips will be distributed to the honorable members by the division clerks. The question is, I shall now put the motion that leave be granted to introduce the bill to vote. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Honorable members, division. Secretary General. Honorable members, division clerks will now distribute the division slips. Members may record their option on the division slips and ensure that they have put their signature and written their names and IC numbers legibly before handing over the slips to the division clerks. इसके बाद क्या होता है? The bill is introduced. Honorable members, result of the division. On the motion for introduction of the bill, the Uniform Civil Code in India Bill 2020, ayes 63, noes 23, abstain nil. The motion is adopted. Shri Kirodi Lal Meena ji, please introduce the bill. I introduce the bill